on with rule 2 now. In rule 2, Sir, this is Tripashla, and I have to ask in question number 5, part B. come again. Uh, Exercise 16, question number 5, part B. If we are क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने अभी पहुंचा नहीं हूं. मैंने आपको उसके जो फॉर्मूलेज हैं. Okay, let me do the formulas. I have not given you the formulas as yet, but they are from your second mates. So, your water plane area, you can find out. There is something called as area coefficient, CW. yes, sir. Area coefficient is a ratio of water plane area to a rectangle having length maximum and breadth maximum. Now, water plane area you will find out from Simpson's rules. And in this question, you are given half breadths. So twice of the maximum half breadth will be the one which you will take. With that will become your breadth maximum. So your maximum half breadth, which is given in question number 5, is 8.48. So it will become twice of 8.48. This will be used, and that is what will give you your CW. This is question number 5. Then similarly, TPC, salt water, is density salt water into water plane area divided by 100. And similarly, TPC dock water will be density dock water into water plane area upon 100. Then similarly, freshwater allowance. In some other question it will come W upon 40 TPC. APC you will find out from the previous formula. Please put your mics on silent. Please mute your mics. Good sir, please put your mic on mute. Then dock water allowance is fresh water allowance into difference of the two densities over 0.025. That is dock water allowance for you. CB is underwater volume divided by LBD, length into breadth into draft. That is block coefficient. So these are a couple of formulas which you will be using from your second maths portion. Any other doubt? Okay, is that okay? Actually, sir, when I was solving this question, in question number 5, part B, in starting Simpson, there is one formula is given: area is equal to constant H into sum of product. As per this rule, I was trying to solve this question, but the answer was coming different. But with another rule, I have taken that area is equal to constant length into breadth. This formula I have solved. So what is the difference between this formula and this formula, sir?
Which formula and which formula? I don't know what you're Um, talking about. in chapter 20 Simpson rule, there is one formula is given, area is equal to K constant into H into sum of product. If I will try to find the constant from this formula, then I will not get the answer. I don't know what you're talking about right now. I suggest you just stick to what we are doing in class. Let's do that way, and we'll progress much more smoothly. So Okay, just follow whatever we are doing in class. That's all. okay, okay, Okay. Let's just follow that. okay. Okay. Otherwise, then we'll just keep be going left to right. You can just write down. Have you written all the formulas down? Yes. Okay. Okay. Next, we come to rule number two. Rule number two. So, in rule number two, the area is given by the formula 3h by 8 into SOP. So, if I compare this formula with my basic standard formula, then the value of K is how much? 1/3. Here, 3/8. 3/8. Is everybody okay with this? Yes, sir. Okay. So, the Simpson's multipliers for rule 2 are starting with 1331. So, what will be the n for this? 4. Then next is 133, 233, 1. So, n will be 7. 7. So, we notice plus 3. Then the chain is now 233. जैसे rule number 1 में 2 4 की chain थी. This is 233, 233, 1. So 7 plus 3, 10. And then therefore the next one will be 13. Next one will be 16, and so on and so forth. That means for rule number 2 to apply, the n has to be greater than equal to 4, starts at 4, then at plus 3 interval. At plus 3 interval. At plus 3 interval. So that means the first one is the even, second one will be an odd, then will be an even, then will be an odd, and like this would be the sequence. It will follow a even, odd sequence starting with 4 at interval of plus 3. So is rule number 2 okay with everybody?
सर इसमें जैसे n equals to 7 we can also solve by rule number 1. अभी एज ऑफ राइट नाउ यस, अभी मैं उसको सॉल्व करूंगा. Okay. प्रेजेंटली वो कॉमन है, 7 कॉमन है, 13 कॉमन है. All odd numbers are common. अभी एज ऑफ राइट नाउ. Yes sir. As of right now. Except 3. Yeah. Not all odd numbers are common. These are the So numbers whichever which are are common, coming in rule number 2. which are coming in rule number 2. Those are the odd numbers which are common. Sir, this Simpson multiplier first and last would be 1, then starting with 3, 3, 2. No. First and last will be 1. Second and third will be 3, 3. Then Okay. 2, 3, 3. Then 2, 3, 3. Then 2, 3, 3. 2, 3, 3 is the chain. The chain of 2, 3, 3. Like Okay. over there, the chain was 2, 4. Correct, sir. So here the chain is of 2, 3, 3. Okay, sir. First and last would be 1, then 3, 3, then 2, 3, 3. Correct. Then Okay. 2, 3, 3. Then 2, 3, 3. Then 2, 3, 3. Okay, sir. Okay. Now let us come to question number 3. Let's come to question number 3 of exercise 16. And we'll draw a diagram for that. We have to find out the area of a collision bulkhead. So it's a bulkhead. A bulkhead means a bulkhead will have a top and a bulkhead will have a bottom. And a bulkhead will have a certain height. And half breadths are given. That means half a bulkhead is given. So a bulkhead has a certain top, a bulkhead has a certain height, and a bulkhead has a certain bottom. This is the top of the bulkhead. The area of a collision bulkhead 12-meter high. So this is 12-meter high. The half breadths at equal interval from top are given as follows. Half breadth means half the breadth. Full breadth means port to starboard. This is the center line. This is the top. This is the keel, the bottom. This is the top of the bulkhead. So I'm doing question number 3. The half breadths at equal interval from top are 7. So this is 7. This is the half breadth. The next one is 4.8. This is 4.8. The next one is 2.95. Next one is 2.95. Next one is 2. Next one is 1.65. Next one is 1.3. And the last one is 0. And we join this. So this becomes our half bulkhead. Because half breadths are given. The actual bulkhead is on this side also. But that is not been done. So naval architects take half the shape very often. And then they use symmetry by doubling it. So in this kind of a question, H is this. This is H. So H is equal to
height divided by n minus 1. So in a bulkhead kind of a question, it will become height divided by n minus 1. So tell me the h value. Sir, 2 by 6. 12 divided by 7 minus 1. 12 divided by 6. So h is 2 meters. So in this question, supposing I had given you length is 100 meters, then length is a distractor. In a bulkhead, length has got no meaning. I'm just distracting you. So I could give you a question, collision bulkhead, length 100 meters, height 12 meters. So you will use height to calculate h. Is that okay with everybody? Yes, sir. Yes, sir. Okay. All right. So having done that, okay. Now n is 7. Which rule would you like to use? You've got rule 1, which you can use, and you've got rule 2 also, because there are 7 ordinates given. Both the rules are applicable. Both the rules are applicable. So we will use what is called as rule of priority. Rule of priority says rule 1 will prevail over rule 2, will prevail over rule 3. So therefore, this question, you will, under normal circumstance, use rule 1. But supposing I write over here in this, use rule 2. So I'm compulsorily wanting you to use rule 2. Is that okay? Yes, sir. All right. So now I want you to calculate this using rule 2. So make a table using rule 2 now we are doing, because I'm insisting on that so that we get a practice of that. What will be the title of the first column? Ordinance. Ordinance from the. So because it's half breadth, it will become semi-ordinates. So when we use half breadths in a question, then it is semi-ordinates. Is it okay? When it's full breadths, then it is ordinates. Is it okay? Okay. So I could have written half breadths from top, or I could have written semi-ordinates from top. Same thing in meters. Order will remain the same. Don't change the order. 7, 4.8, 2.95, 2.0, 1.65,
1.3 and 0. Title of the second column. SM. Okay. What will be the SMs that you would like to use? 1 3 3 2 3 3 1. Okay, is that okay? Title of the third column. Area function. It's going to give you Area half a, function. it's going to give you half area. So semi area function. Is that okay? See, ordinates will give you area. Half ordinates will give you half area. Very simple. Is that okay? Yes. Okay. So multiply them and find out the value of SOP. 48.6. सबका सेम आ रहा है? Is everybody getting the same answer? So semi area will be 3h by 8 into Sir, SOP. h by 3 into SOP. Sir. Rule 1 लगाया सर. हमने Rule रूल 1 1 नहीं लगाया. लगाएंगे सर यहाँ पे. अरे मैंने आपको खास बोला था ना. सर आंसर 43.1 आ रहा है सर. 43.1 Yes, sir. 43.1. Yes, Sir. Semi area is 43.1. सी मैंने आपको खास बोला ना. आपने सुना नहीं. I want you to use rule 2. मैंने आपको खास बोला. Got it, sir. Got it, sir. मैं आपको रूल 2 की प्रैक्टिस करा रहा हूँ ना. तो मैंने आपको इंसिस्ट किया. मैंने कहा मैं सपोजिंग मैं इस क्वेश्चन में लिख देता हूँ यूज रूल 2. तो मैं रूल 2 की प्रैक्टिस करा रहा हूँ. अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंस अगर कुछ नहीं लिखा होगा तो आप ये प्रायोरिटी लगा के रूल 1 लगा के आप h by 3 कर दोगे. नो डाउट. So tell me the value of semi area. So 32.325. 32.325. सबका सेम आ रहा है? Yes, sir. So now area of the bulkhead will be twice of semi area. Is this okay with everybody? Sir, just because it's given Yes, sir. half breadth, so everything will be semi, right? Correct. Absolutely right. Because it is given as half breadth, everything will be semi. Okay, And then, sir. so I just find out the semi, and then last may I do twice. Okay, sir. Understood. So by what better name do I know this area as? Cross sectional area. Correct. Absolutely right. So ये आपका CSA है. Is that okay? Yes, sir. All right. So
This is a bulkhead or half a bulkhead diagram that you have drawn. And similarly, in a WPA diagram, water plane area diagram, when you are given half breadths, the diagram will look like this. These are the half breadths. Is that okay? So your WPA diagram, full thing, is known as a fish diagram because it resembles a fish. And if it's a half breadth given, then it will be a half fish. And the question will ask you WPA. So the WPA will be twice of the half fish. Is that okay? Is that Yes, okay? sir. Yes, sir. Yes, sir. All right. So in a fish diagram or a half fish diagram, supposing I give you length is 100 meters and height is 10 meters. What will you use to calculate h? Length. Sir, length. Right. So in a fish diagram, height is a distractor. In a bulkhead diagram, length is a distractor. Is that okay? In a fish diagram, height is a distractor. We use length to calculate h. In a bulkhead diagram, length is a distractor. We use height to calculate h. All right. Rule number 3. So rule number 3 A, B, C, D, E. This is H. This is A1, A2, A3, A4. Rule number 3 is used to calculate area of any two consecutive ordinates. Rule number 3 is used to calculate area of any two consecutive ordinates. Matlab, I want you to calculate only area A1. So A and B are consecutive semi-ordinates or ordinates. So we will use rule 3. So the formula is H by 12 into SOP. So the value of K is how much? 1 by 12. 1 by 12. The Simpson's multipliers for rule number 3 are 5, 8, and minus 1. 5 and 8 will be put
on those ordinates whose area we need to find. वहां पे 5 और 8 लगेगा, जिन दो के बीच में हमें एरिया ढूंढना है, और -1 लगेगा नेक्स्ट वाले पे। सो अगर मुझे A1 का एरिया ढूंढना है तो 5 A पे लगेगा और 8 B पे लगेगा ताकि मुझे A1 मिले, और -1 नेक्स्ट कंसेक्यूटिव ऑर्डिनेट पे लगेगा, यानी कि चार्ली पे लगेगा। अब मैं आपसे A4 का एरिया मांगता हूं, तो कहां पे लगेगा? सर उल्टा 5 C and D पे फिर D पे 8. 5, 8 and -1. Is this okay with everybody? ये समझ में आया? सर ये A4 के लिए किया है, ये A4 के लिए किया है, ये A4 के लिए किया है। ये एरिया ढूंढना है मुझे। पहला वाला जो कर रहा था A1 के लिए कर रहा था। ओके। और कोई तरीका ही नहीं है। सपोजिंग मैं B पे 5 लगाता और इस पे 8 लगाता तो -1 किस पे लगाता, और सपोजिंग मैं D पे 5 लगाता, E पे 8 लगाता तो -1 किस पे लगाता। सो फॉर द एंड ऑर्डिनेट्स, एंड एरियाज, I can either only go left to right or I can go only right to left. But supposing मैं आपको A2 बोलूं निकालने के लिए, बोथ वेज। now I can go both ways. Do you agree on this? Yes, sir. Okay. तो सपोजिंग A2 निकालने को मैं बोलता हूं आपको, तो आप लगाते हो 5, 8, -1, और कोई और लगाता है 5, 8, -1। तो क्या इन दोनों के आंसर्स सेम होंगे? डिफरेंट होंगे सर, डिफरेंट होंगे। क्यों डिफरेंट होंगे? बिकॉज द ब्रेड्स आर डिफरेंट। बिल्कुल ठीक। डू यू ऑल एग्री ऑन दिस स्टेटमेंट? क्योंकि ये ऑर्डिनेट, ये ब्रेथ्स डिफरेंट हैं। ए इज डिफरेंट फ्रॉम डी, तो मैं -1 जिस पे लगा रहा हूं वो डिफरेंट है। बी और सी की ब्रेथ्स भी डिफरेंट है, मतलब ऑर्डिनेट ही डिफरेंट है मेरे। तो अगर मेरे ऑर्डिनेट डिफरेंट हैं तो मेरे आंसर्स भी डिफरेंट होंगे। तो इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई इन एग्जाम्स, what we follow is we will apply 5 and 8 in the same order as that given in the question. समझ में आया? यानी कि अगर मुझे क्वेश्चन में ऑर्डिनेट्स AP टू FP दिए हुए हैं, यानी कि लेफ्ट टू राइट, तो मैं 5 और 8 लेफ्ट टू राइट लगाऊंगा। अगर मुझे क्वेश्चन में ऑर्डिनेट्स FP टू AP दिए हुए हैं, यानी कि राइट टू लेफ्ट, तो मैं राइट टू लेफ्ट लगाऊंगा। इज दैट ओके? ओके सर एक बार रिपीट करना सर। रिपीट कर देता हूं। सपोजिंग क्वेश्चन में ऑर्डिनेट्स ABCDE इस ऑर्डर में दिए हुए हैं, लेफ्ट टू राइट है, और मैं आपको बोलूं A2 निकालना है, तो आप 5 और 8 कहां पे लगाओगे? लेफ्ट टू राइट लगाओगे। सपोजिंग मैंने आपको ऑर्डिनेट्स दिए हैं क्वेश्चन में EDCBA, तो अब आपको मैं बोलता हूं A2 का एरिया निकालो, तो कैसे लगाओगे? 5,
8 minus 1. Is that okay? Does it simplify life? Yes, sir. सर EDCBA जैसे हमें हाउ विल वी आइडेंटिफाई किए उल्टे ये डिपेंडिंग अपॉन द ब्रेथ जहाँ पे जीरो की तरफ सबमर्ज हो रहे हैं तो वैसे नहीं देखेंगे. नहीं, क्वेश्चन में आपको दिया होगा ना, द ब्रेथ्स एज गिवन फ्रॉम फॉरवर्ड. फॉरवर्ड क्या है? अच्छा ओके ओके फ्रॉम फॉरवर्ड और फ्रॉम ऐसे वाला. ये फॉरवर्ड है, ये आफ्ट है ना. क्वेश्चन में आपको दिया होगा फ्रॉम फॉरवर्ड, फ्रॉम आफ्ट. ओके सर, जिस तरफ से है फॉरवर्ड से पूछा है तो फिर वहां से उल्टा 5 वहां पे रखेंगे. एब्सोल्युटली राइट. ओके. बट सर फाइनल आंसर जो है दोनों मेथड से सेम आना चाहिए ना एरिया. नहीं, सेम नहीं आएगा, थोड़ा सा डेसिमल्स में फर्क आएगा. ओके, ओनली इन डेसिमल्स. हाँ, डेसिमल्स में फर्क आएगा, क्योंकि ये अल्टीमेटली ये इंटीग्रल है, इंटीग्रेशन है. सो इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो इंटीग्रेशन में व्हेन यू गो फ्रॉम अ सर्टेन वैल्यू टू अ सर्टेन वैल्यू, किस दिशा में आप जाते हो वो मैटर करता है. ओके सर. सो सर दैट बाय इज चांस अगर दूसरे मेथड से कर देते हैं तो उसके मार्क्स कटते हैं? नहीं, मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ जाती है कि व्हेन यू हैव 400 आंसर शीट्स and all 400 will have different answers. So imagine the plight of the examiner. How do you correct the papers? Get the point? यस सर. So मतलब because ये सिम्पसन में तो different combinations भी चलेंगे आगे जाके, तो मतलब सोचो क्या हाल होने वाला है. Got it? यस सर. Okay. So basically when n is equal to 3, which rule will you use? रूल 1. Rule 1. बस N is equal to 4, which rule would you use? रूल 2. One both can be used. 4 में both can be used. रूल 2 ओनली. अरे भैया क्या कर रहे हो, ऐसा मत करो. सर रूल 2 फॉर 4. Rule 2, only rule 2. Okay. N is equal to 5. Rule 1. Rule 1. Agreed. N is equal to 6. No rule as yet. Okay. Correct? Yes sir. Yes. N is equal to 7. Both 1 and 2. Both 1 and 2, 1 on priority. Yes. Rule 1. Rule 1 on priority. N is equal to 8. No rule. Agreed? Yes sir. N is equal to 9. Rule 1. 1. Rule 1. N is equal to 10. 2. Rule 2. Rule 2. N is equal to 11. Rule 1. Rule 1. N is equal to 12. No rule. No rule. N is equal to 13. Rule 1 on priority. 13. N is equal to 14. No rule. No rule. No rule. तो मेरी एक सीरीज बन रही है +2 +4 +2 +4 +2 +4, यानी कि मेरी एक ये सीरीज बन रही है 6, 8, 12, 14, 18, 20, 24 एंड सो ऑन सो फोर्थ. ये एंड्स में रूल 1 डायरेक्टली एंड रूल 2 डायरेक्टली नहीं लग रहा है, यानी कि जब मेरे को 6 दिए होंगे तो मैं डायरेक्टली यूज नहीं कर पा रहा हूं.
गॉट इट? यस सर। यस सर। सो दैट मीन्स अगर मैं आपको ये डायग्राम दे दूं ऐसे, और इसमें 6 दिए हुए हैं, सपोजिंग मैंने 8 दे देता हूं, चलो 1 2 3 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8। ये है A B C D E F G H, इधर यूज हो रहा है I, ये मेरे H है, और मैंने आपको n इज इक्वल टू 8, और मैं कहता हूं आपको फाइंड आउट द एरिया, and the ordinates given are from half perpendicular. तो आपको कॉम्बो लगाना पड़ेगा. You will have to, for all these ends we use what is called as a combo, a combination rule. Combination of what? Combination of rule 1 and rule 2. यानी कि मैं रूल 1 एंड रूल 2 का कॉम्बिनेशन लगाऊंगा. तो क्या मतलब है? पहले मैं रूल 1 शुरू कर रहा हूं. 1 4 2 4 1, ये मेरा कॉमन बल्कहेड है, और आखिरी के जो 4 हैं 1 3 3 1, यानी कि इस सेक्शन में मैं रूल 1 लगा रहा हूं और इस सेक्शन में रूल 2 लगा रहा हूं, और ये जो मेरा एको है ऑर्डिनेट, ये मेरा कॉमन बल्कहेड है. ये मेरा रूल 1 हो गया, A to E, और E to I मेरा रूल 2 हो गया. That means I'm using a combo of rule 1 plus rule 2 in the same order as that given in the question. So this is rule 1 plus rule 2. I could have used 1 4 2 4 1 1 3 3 1. That means delta को मैं common bulkhead बना लूं. But then it has to be given in the same order as that given in the question. That will be a combo of 2 plus 1. And in priority, rule 1 plus 2 will prevail over rule 2 plus 1. So therefore, I will always use 1 plus 2. I'll always allow for rule 1, and then the last 4 will always be rule 2. Hamisha. Sir, excuse me. When we will use rule 2 plus 1 when it is given from forward? From forward. So we will never use this. So we will never be using rule 2 plus 1. We will only be using rule 1 plus 2. Why? Because I will use 1 4 2 4 in the same direction जहां से मुझे दिए हुए हैं ऑर्डिनेट में. अगर मुझे 14 दिए हुए हैं तो मैं 1 4 2 4 2 4 2 4 2 4 1, आखिरी के 4 1 4 1 3 3 1. सर ये कॉमन ऑर्डिनेट कहीं पे भी रख सकते हैं? ये कहीं पे भी रख सकता हूं मैं. तो आखिरी के 4 पहले गिनती कर लूंगा उल्टी डायरेक्शन से. ओके. कॉमन बल्कहेड पहले बना दूंगा. अब शुरू हो जाऊंगा. ओके, सो फोर्थ बल्कहेड फ्रॉम फॉरवर्ड वो बना देंगे कॉमन बल्कहेड. वो कॉमन बल्कहेड बन जाएगा. ओके, और बाकी का रिमेनिंग हो जाएगा रूल 1 से. वो रूल 1 से हो जाएगा.
और सर अगर इसको अगर 7-7 से सॉल्व करें सर, फर्स्ट एंड विद सेकंड रूल 7 फर्स्ट फ्रॉम आफ्ट we are taking 7 and then seventh bulkhead will be the common and then next will be from rule 2. कैसे करोगे? 1 2 3 4 5 6 7 जी तक? जी सर। नहीं, अगर 14 जैसे 14 दिए होते हैं तो आपने फिर अभी आपने बोला 14, अगर 14 का n is equal to 14 रहता है, in that case करेक्ट। if we take 7 then would be same. नहीं, you will then basic fundamental is आखिरी के 4 पे 1331 लगा दो एंड मेजर लेंथ ऑफ रूल 1 आना चाहिए। ओके सर। तो आखिरी के 4 1331 लगा दिया, कॉमन बल्कहेड को डिमार्केट किया, तो सपोजिंग 20 है तो आखिरी के 4 कॉमन बल्कहेड बना के और फिर मेन बॉडी में रूल 1 फिट कर दिया। सर ऑल्सो वो हो नहीं पाएगा n इज इक्वल्स टू 14 में जब अगर 7th को कॉमन लेंगे तो उसके बाद 8 बच जाएंगे। वो भी बात है, वो भी बात है। हाँ सो बेसिकली कहने का क्या मतलब है कि ये जो कॉमन बल्कहेड है ये इधर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, इधर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये दोनों को कंट्रीब्यूट करेगा। जो कॉमन बल्कहेड है ही इज लाइक माय इंटर टैंक बल्कहेड बिटवीन टू टैंक्स। ओके, ही इज लाइक माय इंटर टैंक बल्कहेड। वो इंटर टैंक बल्कहेड है मेरे इस टैंक के इस साइड को भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, उस टैंक के उस साइड को भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, दोनों साइड को कंट्रीब्यूट कर रहा है। और मैं इससे एरिया A1 निकालूंगा h/3 से, इससे एरिया A2 निकालूंगा 3h/8 से, देन A1 प्लस A2 विल गिव मी टोटल सेमी एरिया, क्योंकि मैं हाफ कर रहा हूं तो इसलिए दैट विल गिव मी A1 प्लस A2। और फिर मैं टोटल एरिया चाहिए मुझे वाटर प्लेन एरिया, वो तो मेरा स्टैंडर्ड है ट्वाइस इनटू सेमी एरिया। इज दैट ओके? सर ये रूल 6 के केस में हम 1 को कॉमन लेंगे क्या? दोनों रूल्स के बीच में 1 आएगा जैसे। अगर 6 होता यस सर, n इज इक्वल टू 6 होता तो 141 और 1331 में आई थिंक 1 शायद कॉमन आना चाहिए, अदरवाइज करेक्ट। 7 से ही होंगे। 1 2 3 4 5 6 दैट मीन सपोजिंग यहां तक है, सपोजिंग ये है 6, सो ये है मेरा 6, तो 1 4 1, सो मेरा ये कॉमन बल्कहेड है एंड 1 3 3 1, तो चार्ली विल बिकम माय कॉमन बल्कहेड। इज दैट ओके? यस सर। That's how it is going to be. All right, let's stop here. I want you to do exercise 16 complete now. So please do exercise 16. You should be able to do using the rules that we are describing in the class. Okay? Maybe your answers don't match. It's okay. Don't worry. Just follow these methods that we are following. So don't worry so much about the answers. Methodology is very important. Because we need to follow the practice जो MMD में चल रही है. So this is the practice that is being accepted in MMD. ठीक है? Is that okay? So sir, in any case हम लोग end में 1331 लेके बाकी remaining rule 1 से कर सकते हैं. That's right. So इसलिए हमेशा आखिरी के 4 को पहले कर दो, 1331 पहले फिट कर दो आखिरी के 4 को, फिर शुरू हो जाओ रूल 1 से। तो सर इसमें कभी स्पेसिफिक मेंशन नहीं रहता है ना कि 2+1 करना है? ना ना, ऐसा कोई नहीं, नेवर। सो वी कैन ऑलवेज फॉलो दिस। करेक्ट, ऐसा कभी नहीं होगा। यू विल नेवर बी गिवन कि स्पेसिफिकली ये मेंशन करके कि ये करो, वो नहीं होगा कभी। ओके।
ठीक है सर ये कैप्टन रजत जैन अब क्लासेस ही नहीं लेंगे क्या सर हमारी? नहीं, he is right now unwell. He is still in the hospital. He has not come back. Okay, sir. I put Captain Gurnani to take the classes, start the chart work with you. So he'll be starting the chart work tomorrow. ठीक है, चार्ट वर्क तो वो करवा देंगे सर, बट इनके ना सारे टॉपिक बाकी हैं जो कैप्टन रजत के वो करवा दूंगा मैं करवा दूंगा. Don't worry about it. हमारा सेफ्टी हो गया सर. Baba will come back to do Captain these Baba will come topics. back. एक बारी कैप्टन बाबा आ जाएंगे तो then वो करवा देंगे वो. Don't worry about that. Sir, और हमारे एग्जाम्स कब से स्टार्ट है सर? So your for the March batch, your chart work exam, navigation exam, I'm deferring it. We will hold it आखिर में last. तो 14 या 15, 14 या 15 या 16 को करूंगा मैं नेविगेशन का. एक बारी जब नेविगेशन का सिलेबस पूरा शांति से तसल्ली से खत्म हो जाएगा तब. यस सर, क्योंकि सर क्वेश्चन 8 और 9 करते हैं तो कुछ पता नहीं चलता है इसमें, मतलब ये सारी बाकी है अभी, मतलब कैप्टन रजत सर का. Don't worry about that. सर हमारा सेफ्टी हो गया. अगर सेफ्टी की जगह मतलब एक्स्ट्रा क्लासेस लगानी है लगा सकते हैं. सेफ्टी हमारा कंप्लीट हो गया. अच्छा, सेफ्टी का खत्म हो चुका है. यस सर. ऑलराइट, ठीक है. So basically that's the reason why I've introduced Captain Gurnani. He will start with chart work tomorrow, and then next week I'll give more classes. We'll see how it goes, how much this thing. Then उसको defer कर दूंगा मैं. Exams का मेरा plan है to start it for the March batch. Original plan was to start on 8th. Now I'll probably start it on 9th. 9th of 7th. Sorry, original plan was to start it on 7th. Now I'll start it on 8th, or maybe on 9th, something like that. या 9 तारीख को कर दूंगा या 8 तारीख को, something like that. So navigation का एग्जाम we'll hold it till बाद में. जो एग्जाम जिनके सिलेबस खत्म हो जाएंगे उनको पहले करेंगे. एंड जैसे नेविगेशन का there'll be some more extra classes also required, I feel. So वो मैं extra classes डलवाऊंगा. Okay sir, please. I'm keeping a track of that. सर डीजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछना था, पूछ सकता हूँ सर? बोलो. सर जैसे अभी फोटोग्राफ और सिग्नेचर वगैरह अपलोड हो गया है सर, बट लेटर ऑन देयर इज सम प्रोसीजर यू नीड टू. धैर्य गौतम का अभी भी नहीं हुआ, एक का अभी भी पेंडिंग है अभी भी. अच्छा. हाँ बोलो क्या बोल रहे थे? तो सर देयर इज सम प्रोसीजर की फोटो. सर हो गया सर, आज हो गया. चलो गुड. चलो yes, because yesterday night I was in touch with DG and all that, so all that this thing was going on. So चलो done sir. बच गए, नहीं तो आज I would have had to remove you from the class. ये हो गया सर, I just checked it. Okay, चलो great. जरा एक मैसेज डाल दो साजन को. Yes sir. Yeah, just do that. तो सर जैसे फोटोग्राफ अगर चेंज करनी हो, आई थिंक दे वांट द लेटेस्ट फोटोग्राफ टू बी अपलोडेड एंड देन यू हैव टू क्लिक थ्रू लैपटॉप cam and then they will compare and then so I can change the picture right now. Everything is done, so or is it okay? अभी कर तो सकते हो, कोई इशू नहीं है. Okay, कर तो बस you can do it. There is no issue. You can change it and all that. But you are in which batch? May batch. एक बारी जरा अपलोड, अगर डेटा अपलोड हो गया है कि नहीं हो गया है वो देख लो जरा. Okay. Right, because you just joined, so just let about a month elapse. Okay, I'll उसके do. बाद उसके बाद कर लेना. Okay. एक महीने के बाद, ताकि एक महीना पहले निकल जाए, ताकि डेटा इज अप देयर, ये वो एक्सेप्टेड, कोई अड़चन वड़चन ना आए. उसके बाद में एक महीने के बाद में आराम से अपना करते रहना. फॉलो DGS order number 7 of 2021. Yes, because I have to take a picture through phone and then they will compare. Something like that. Yes. Correct. Okay, I'll do after a month, sir. No problem. Yeah, एक महीने के बाद. सर अगर किसी क्वेश्चन में फ्रॉम टॉप और फ्रॉम